Hello friends, my name is Kavya. Welcome to our channel Kavya Education Zone. आज से मैं क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ कंप्यूटर बेसिक क्वेश्चंस की। आप थंबनेल पर देख पा रहे होंगे कि ये हमारी क्लास फर्स्ट है जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बेसिक क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर। हर क्लास में 30 क्वेश्चंस रहेंगे और कंप्यूटर के एकदम बेसिक क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम। आपको अगर पता है तो अपना आंसर कमेंट पे दे दीजिएगा। इसका आंसर होएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। आर फॉर रैम रैंडम, ए फॉर एक्सेस एंड एम फॉर मेमोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, Which device is used to input data into a computer? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्रिंटर, ए मॉनिटर, कीबोर्ड एंड डी स्पीकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। सी ऑप्शंस कीबोर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, Which of the following is an example of system software? यानी कि जो हमारे को यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इसमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। फर्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, विंडो 10, गूगल क्रोम एंड अडोब रीडर। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विंडो 10। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, Which of the following is not a programming language? यानी कि जो हमारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। फर्स्ट है पाइथन, HTML, जावा एंड डी फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर आपके आंसर सही हैं तो कमेंट में लिख के बता दीजिएगा आपका 30 आउट ऑफ कितना स्कोर रहा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, Which part of the computer is responsible for executing instruction? Option number 1 hard disk, B RAM, C CPU and D motherboard. The right answer of question number 5 is C, CPU. Next question हमारी स्क्रीन पर है। Sixth, which storage device has the largest capacity? DVD, USB flash drive, SSD, hard disk drive. What is the right answer of this question? The right answer of this question is D, hard disk drive. इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है HDD. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7. What does GUI stand for? फर्स्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जर्नल यूजर इंटरफेस, guide user interface, graphical user interaction. What is the right answer of question number 7? The right answer of the question number 7 is first graphical user interface. Our next question is, which of the following is a wallet memory? Volatile memory. Option number 1 SSD, B hard disk, option number C RAM and option number D is ROM. What is the right answer of question number 8? And the right answer of question number 8 is C, option number C, RAM. The next question of 9, next question 9. What is the main function of an operating system? Option number 1 perform calculation, option number B manage hardware and software resources, C है हमारा browse the internet and D is create document. What is the right answer of 9th question? The right answer of 9th question is option number B, manage hardware and software
resources. Next question is, what does URL stand for? Option number A, Uniform Resources Locator. Option number B, Uniform Resources Link. Option number C, Universal Resources Locator. Option number D and last option is Universal Resources Link. What is the right answer of question number 10? The right answer of question number 10 is A, Uniform Resources Locator. Question number 11 is, what is the purpose of a firewall in a computer network? Option number A, to speed up the internet. Option number B, to protect against. Option number C, to manage network traffic. And option number D is to boost Wi-Fi signal. The right answer, what is the right answer of question number 11? The right answer is question number 11 is B. What type of software is used to surf the web? Option number 1, operating system. Option number B, web browser. C, database. D, text editor. What is the right answer of question number 12? The right answer of question number 12 is B, web browser. Next question 13. What does HTTP stand for? Hypertext Transmission Protocol. Option number B, Hypertext Transfer Protocol. And option number C is Hyper Transfer Text Protocol. Option number D is Hyper Transmission Transfer Protocol. And what is the right answer of the 13th question? The right answer of 13th question is option number B, Hypertext Transfer Protocol. And our next question is 14. Which of the following is an example of an input device? Option number A, printer. Option number B, monitor. Option number C, mouse. Option number D is speaker. And what is the right answer of question number 14? The right answer of question number 14 is option number C, mouse. Our next question is 15. What is the smallest unit of data in a computer? Option number A, byte, and option number B is bit, C, nibble, and D, kilobyte. The right answer is option number B, byte. ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, ये जो हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. Our next question is 16. What is the purpose of the ALU in a computer? To manage memory, to perform arithmetic and logic operations. C, to control input and output, to manage storage. What is the right answer of question number 16? And the right answer of question number 16 is B, to perform arithmetic and logic operations. And our next question is 17. Which file format is used for images? Option number A, doc. B, XLSX, and C, JPG, and D, PPT. The right answer of question number 17 is JPG. Our next question is 18. Which key is used to delete the character to the left of the cursor? Enter, space, backspace, delete, and shift. What is the right answer of question number 18? The right answer of question number 18 is option number B, backspace. And our next question is 19. Which of the following is a search engine? Firefox, Bing, Outlook, Skype. The right answer of question number 19
is B, Bing. अगर आप मेरे लिए मतलब आप चाहते हैं कि मैं इससे भी अलग और क्वेश्चंस लाऊं और बेसिक अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करते रहूं, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा. इसके हम एक प्रैक्टिस सेट में हम टोटल इसके 30 क्वेश्चंस रखेंगे. अगर आप चाहते हैं कि मैं एक अपने प्रैक्टिस सेट डेली कराती रहूं इसके बेसिक क्वेश्चंस, तो कमेंट में अपनी राय लिखिए और मुझे बताइए. The next question is 20. What does the shortcut key Control plus C do? What does the shortcut Control plus C do? Cut the selected text, copy the selected text, paste the copy text, save the document. What is the right answer of 20? The right answer of 20 is option number B. Copy the selected text. अगर मैं बात करूँ पेस्ट दी कॉपी टेक्स्ट की, इसका आएगा हमारा कंट्रोल प्लस V. एंड अगर मैं इसकी बात करूँ कट्स द सेलेक्टेड डाटा, इसका आएगा कंट्रोल प्लस X. सेव की तो आपको पता ही है कि इसकी है कंट्रोल प्लस एस, और कॉपी द सेलेक्टेड टेक्स्ट इसकी मैंने आपको बताई दी है कंट्रोल प्लस सी. Our next question is 21. What is the function of the control panel in window? Option number A, to access web browser. Option number B, to change setting and control system configuration. C, to edit documents. D, to play media files. What is the right answer of question number 21? The right answer of question number 21 is option number B. To change setting and control system configuration. Option number B. Question number 22. Which of the following is a popular spreadsheet application? Option number A, Microsoft Word. Option number B, Microsoft Excel. Option number C, Microsoft Access. Option number D is Microsoft PowerPoint. What is the right answer of question number 22? The right answer of question number 22 is Microsoft Excel. Option number B. Question number 23. Which of the following is a programming language? Option number A, Chrome. B, Python. C, Windows. D, Photoshop. What is the right answer of 23? The right answer of 23 is B, Python. Next question is 24. What does SSD stand for? Solid state drive, standard storage disk, static stage disk, solid storage drive. What is the right answer of 24 question? The right answer of question 24 is option number A, solid state drive. Our next question is 25. Which of the following is an example of application software? इसका है Linux, MacOS, Notepad, BIOS. The right answer of question number 25 is answer number C, Notepad. When you know the answer of this question, please write in comment box. Question number 26. Which key is used to refresh a web page? Option number A, F5. Option number B, F2. Option number C is F5. And option number D is F plus F12. The right answer of question number 26 is option number C, F5. Our next question is 27. Which of the following is a cloud storage service?
The cloud storage service, option number A, OneDrive, option number B, Windows Explorer, option number C, File Manager, option number D, Task Manager. What is the right answer of this question? The right answer of this question is option number A, OneDrive. What does LAN stand for? Local access network, large area network, local area network, long area network. The right answer of 28 question is local area network. Next question is about 29. Which of the following can be used to protect a computer from viruses? Option A, File Explorer. Option number B, antivirus software, Task Manager, Disk Cleanup. The right answer of this question is option number B, antivirus software. And our last question is 30. What does FTP stand for? File Transfer Protocol, Fast Transfer Protocol, File Transmission Process, Fast Transmission Process. Option number C is File Transmission Process, Fast Transmission Process. And the right answer of question number 30 is a File Transfer Protocol. And this is for you, friends. Question number 31 for you. First question: which of the following is an open source operating system? इसका आप आंसर्स कमेंट में डालेंगे. और हाँ, जो भी इसका आंसर कमेंट करेंगे उसका जिसका आंसर सही होगा उसको हम एक गिव अवे करने वाले हैं, एक पेंसिल बॉक्स का. तो फटाफट से जाइए कमेंट बॉक्स में एंड कमेंट कीजिए इसका आंसर. जिसका आंसर करेक्ट होगा उसको हम देने वाले हैं गिव अवे में एक पेंसिल बॉक्स. एंड राइट योर स्कोर इन द कमेंट बॉक्स 30 out of 30. And do you want more classes of this questions, computer basic questions? So write me on कमेंट बॉक्स. मैं अगर आप कमेंट में लिखोगे कि हाँ हमारे को ऐसी इससे रिलेटेड और क्लासेस चाहिए बेसिक क्वेश्चंस की, तो मैं ऐसे बेसिक क्वेश्चन की और भी क्लासेस लाऊंगी. अभी ये हमारी फर्स्ट क्लास थी. अगर हमारे पास कमेंट में आता है कि इससे रिलेटेड और क्लासेस लाइए तो मैं ज़रूर लाऊंगी. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.